Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar, and I'm sure you are knowing that this is our series of sessions wherein we are guiding students about what to prepare and how to prepare for this CLAT 2021 in a particular section, in a particular area. Yes or no? So this is our fourth module. We are talking about quantitative techniques. If you want to know more legal reasoning or logical reasoning or English, there are separate videos provided. Those links are provided in the description. Please go through them. Yes, great. Let's start to talk about this quantitative techniques. So first and foremost, let's see the syllabus provided in this consortium site. Okay, they said in UG CLAT 2021 will include short sets of facts or prepositions or graphs or other textual, pictorial or diagrammatic representation of numeral information followed by series of questions, which means you will get tables, bar graphs, line graphs, pie charts, okay, based on that the questions are there, or many times you will be provided with text. Okay, so that is popularly known as caselets. Yes or no? Okay, so that means you have cases available, situations are available, data are provided in those situations, and you have to get some answer out of it. Yes or no? Is that comfortable? Yes. So this is popularly known as data interpretation when you are trying to search some questions on it. Okay, okay, that is what I'm just informing that to you. Now the questions require you to do what? Derive, infer and manipulate numerical information set out in such passages, graphs or other representation. So you should be in a position to reach to an inference, not just take out the number, but you should be in a position to develop connection. Yes or no? For example, let us say I'm giving you a data of a population of a particular country. This country will have, you can say, a sort of, let's say, you can say cities. There are 5 cities in the country, A, B, C, D. Okay, and then there are male, then there are female, then there are literate people. Okay, okay, then there are, you can say, literate and illiterate का यहाँ पे रेशियो दे के रखा होगा. Yes or no? So दोस्तों यहाँ पे ये बोलते हैं including from the area such as ratio and proportion, है ना? Ratio proportion बोल दिया, which means you have been provided lot of, you can say, work, है ना? आपको बहुत काम करना पड़ेगा. क्या क्या करना पड़ेगा? What is part of ratio proportion? दोस्तों रेशियो प्रोपोर्शन में, ठीक है, ओके, is ratio proportion include, or does ratio proportion include, you can say, time, speed and distance? Well, yes, it covers that. Work and time, does it cover this? Yes, it covers it. Okay, does it cover profit and loss? Yes, it covers that, profit and loss. Okay, does it cover simple interest, compound interest? Yes, it covers that, because these are the fundamental concepts, people know about it. Yes or no? Does this cover mixtures and allegations? Yes, it covers that. Yes or no? So that means whatever the arithmetic part which, you can say, you might have learned so far through your, you can say, old CLAT pattern, through various books, that would be more than sufficient. Yes or no? So my suggestion is start working with basic concepts of arithmetic like averages, profit loss, simple interest, compound interest, ठीक है, time, speed, distance, work and time, ठीक है, those kind of concepts that is needed. Then you must apply basic algebra. So when you have a text based questions, there you have to develop equations. Okay, you should be in a position to make linear equations. You should be in a position to solve it in various situations. Two variables, two equations,
3 variables, 3 equations, those kind of scenario you should be in a position to develop. Okay, so this is must. Okay, this is must. Okay, then they also mention mensuration, area, volume, all fundamentals like triangle, quadrilateral, yes or no, circles, okay, cylinder, cone, cube, cuboid, okay, frustum of cone, all those things will be part and parcel of this mensuration. Mensuration will majorly cover, you can say, area, volume and perimeter scenario. Okay, for all 2D and 3D, 2 dimension as well as 3 dimension. So my dear students, this is very crucial. And then statistical estimation. Okay, that means you should know what is a central tendency of data, which means you should be knowing average, okay, median, okay, or possibly mode, okay, possibly growth rate, okay, percentage change, ठीक है, all those things will be about statistical estimation. Yes or no? Which one is bigger, which one is smaller, all those concepts will be available. So my dear students, you can say, how do we go about it? Okay, let me tell you this. ठीक है, how do we go about it? First and foremost, ठीक है, do all conceptual part with, you can say, any book, whether it is R.S. Agarwal or study material, ठीक है, and primarily you can go with the old pattern. Topics you should cover are average, percentage, फंडामेंटल है दोस्तों, ठीक है, एवरेज फंडामेंटल है, परसेंटेज फंडामेंटल है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट्स ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड वेरिएशन. Yes or no? Application of it is on work and time, pipes and cistern, time, speed, distance. Okay, these are the arithmetic related part. ठीक है, you must develop understanding about it. ठीक है, mixtures and alligation. That is the arithmetic part you will be doing. Another part which you will be working is on algebra, which is, you can say, equations formation. I suggest do both linear equations and quadratic equations. दोस्तों इतना तो सबको आता है. I'm not making it very complicated for you, but you must know linear equations and quadratic equation. Okay, linear equations and quadratic equation. ठीक है, questions on ages, ठीक है, ये आपको आने चाहिए, which is an overlapping area of algebra and ratio proportion. So ages related questions आने चाहिए. Yes or no? So this is important. Another part which you should know is basically mensuration. All fundamental related to mensuration like 2D and 3D, area, volume and perimeter. ठीक है, ये आपको आना चाहिए दोस्तों. ठीक है, this is very much needed. And some part of statistics like average, which is mean, mode, median, you should know this. Some part of permutation combination, not very complicated as a permutation combination, okay, but the fundamental counting principle of addition, fundamental counting principle of multiplication, that you should know. Fundamental counting principle of, you can say, addition and fundamental counting principle of multiplication. That is what you should know. Okay, these are the topics you should be really prepared about. Okay, I hope it is clear. So sir, how do we go about it? Very simple, है ना, बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों. कैसे हम आगे बढ़ेंगे? बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों. सबसे पहले, ठीक है, विथ एवरी टॉपिक, ठीक है, विथ एवरी टॉपिक वॉच वीडियो जो प्रो टैलेंट ने बना के रखे, फ्री में अवेलेबल है. ठीक है, यू गो थ्रू दिस फ्री वीडियो. ठीक है, नम्रता मैम ने पढ़ाया है, मैंने भी कुछ पढ़ाया है. ठीक है, उसका लिंक यहाँ पे देके रखा है. सभी पूरे हर एक चैप्टर का, यू कैन सी यहाँ पे लिंक है. प्लस
with this you solve at least you can say 50 questions, ठीक है, of old pattern, ठीक है दोस्तों। ये 50 के 50 क्वेश्चंस के ओल्ड पैटर्न के वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड पीडीएफ ऑन आवर वेबसाइट कॉल्ड protalentdigital.com, ठीक है। अच्छा, इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, डेली टेक वन वीडियो, वॉच इट, ठीक है। फॉर एवरी टॉपिक वी हैव 2 videos available, so you can spend 2 days doing videos and you can say questions. Possibly you can watch both video in one day, okay, and next day you solve questions, yes or no, ठीक है। This is what you have to do with every topic, ठीक है, with every topic. Once you complete this, then you shift to DI based questions, okay, ठीक है। अब ये DI based questions फ्री में नहीं है, ये पूरे 50 क्वेश्चन हर चैप्टर के साथ फ्री में अवेलेबल है, 2 टेस्ट आपके लिए दिए है, प्लीज गो थ्रू दैट, ओके। ये फ्री नहीं है, you want to purchase it, there is special DI based you can say questions are developed in our PDF, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देके रखा है। This is a paid version, okay। You want to join a full course for this, ठीक है, that is also possible। You can very well look at our course called courses.protalentdigital.com, ठीक है। Is there anything advanced than this free video? Yes, there are a lot of detailed part are discussed, ठीक है, हर छोटी छोटी चीज कवर करी है यहाँ पे। You can very well take that course, ठीक है, DI based, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, then you go for your sectional test। तो ये समझिए, मैथ के ऊपर, दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक के ऊपर जिन बच्चों ने मेहनत अभी करी, ठीक है, believe me, they are going to reap benefits in large numbers in marks, ठीक है, at later on। जिन्होंने अभी मेहनत नहीं करी वो पक्का फंसेगा बच्चा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, आप फंसो मत, ठीक है। मैं चाहता हूं अभी मेहनत करिए, मैंने आपके सामने टॉपिक बता दिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो भी बताया, ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड भी बताई, सोर्सेज भी बताए, बट डू नॉट मिस आउट टू पुट ऑल योर एफर्ट्स, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करो, आप मेहनत करो तो आप मैथ में अच्छा स्कोर लाओगे। मैथ इज अ डिसाइडिंग फैक्टर मेनी टाइम्स, ठीक है सर। हमने तो पढ़ा है कि कंसोर्शियम बोलता है कि टाई ब्रेकर इज अ लीगल रीजनिंग सेक्शन। यस, टाई ब्रेकर इज अ लीगल रीजनिंग, बट इफ यू नो दिस 50-55,000 स्टूडेंट्स, ठीक है, जो क्लैट की परीक्षा में आपके साथ कंपीट करने आएंगे, उनमें से 98-99% स्टूडेंट्स, ठीक है, विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विथ मैथ्स, ठीक है। तो गेम तो वही वो टॉप 1% का है जो मैथ्स में कंफर्टेबल है, ये सुनो, और आपको उनके साथ लड़कर टॉप 1% में तो जाना है, yes or no? So my dear students, don't miss out on your math, ठीक है। आपने मैथ में अभी मेहनत नहीं करी, ठीक है, आप सिंपल जब रैंडम डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो नहीं चलेगा। फंडामेंटल डेवलप करो, आपके पास फ्री में अवेलेबल है कंटेंट, देन हु इज वेटिंग, मतलब व्हाई आर यू वेटिंग फॉर एनीथिंग, ठीक है। बस ये काम करो, फिर ये डीआई पे चले जाओ और फिर ये काम आगे बढ़ाओ। आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट, यस और नो। लास्ट ईयर यू कैन से 3 पैराग्राफ दिए गए थे, मतलब 3 में से एक पैराग्राफ था, 2 डीआई के सेट थे, हर एक के साथ 5 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस थे। दोस्तों ये 15 क्वेश्चन में से बच्चों के करीबन 8 के ऊपर लाना वाज वेरी डिफिकल्ट। नहीं लेकर आए थे बच्चे, ठीक है, आप लेकर आ सकते हो, ठीक है। लास्ट ईयर बच्चे नहीं लाए थे, आप लेके आओ, मेहनत करो, आपके पास 5 महीना है, yes or no। in fact we have covered all these sessions live, ठीक है, लास्ट वीक ही, लास्ट फ्राइडे ही पूरे के पूरे लाइव सेशंस कंप्लीट हुए हैं, उनके पूरा रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम चैनल पे देकर रखा है, प्लीज देख लीजिए उसको, पूरा सेशंस हमने आपके लिए बना के दिए, ठीक है। तो भैया किस बात का वेट कर रहे हो, लग जाओ तपस्या में, मेहनत करो, ये सब दो। चलिए ग्रेट दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत हमारी चैनल को, एंड शेयर दिस चैनल वाइडली टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना। और ये प्रो टैलेंट डिजिटल पे जाकर ये टॉपिक के वीडियो और उसके साथ पीडीएफ लेना भूलिएगा मत, ओके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।